दूसरी सूडो एक्सफोलिएशन, ये हेडिंग याद रख लो। देन इन्फ्लेमेटरी जैसे यूवीआइटिस, देन पिगमेंटरी, pigment cells from iris shed out, then new vessels form and block the end. Then steroid induced, excess use of the steroid by those who are steroid responders, एंगल में चेंजेस आती हैं, कुछ क्रिटिकल मेशवर्क में चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेज बन जाती है। देन ट्रॉमेटिक एंगल रिसेशन। अब इन सारी वैरायटी को I would like to go quickly through these ताकि आपको कॉन्सेप्ट बन जाए सेकेंडरी ग्लाकोमा के बारे में। So बहुत clearly there should be some other disease which is leading to blockage of drainage, rise in intraocular pressure, and this rise then causes damage of optic nerve fibers and the visual field defects follow it. ठीक है? Okay. आगे चलिए। लेंस इंड्यूस्ड में मैंने सबसे पहले कहा था देयर आर टू स्टेज। हमने कैटरेक्ट को पढ़ लिया है। कैटरेक्ट जब बनना शुरू होता है तो उसकी 6-7 स्टेजेस हैं। उसमें से सबसे पहले है इंसिपिएंट स्टेज, फिर इंटुमेसेंट स्टेज, फिर इनमेच्योर, फिर मैच्योर, फिर हाइपर मैच्योर। उसकी 2-3 वैरायटियां आगे, मॉर्गेनियन एंड सिक्लेरॉट है। 2 स्टेजेस लेंस स्वेल्स अप, जिसमें लेंस का साइज बड़ा हो जाता है बिकॉज fluid is imbibed into the lens itself from outside comes in, क्योंकि अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होता है and fluid enters into the lens and lens swells up. When the lens swells up it blocks the pupil, क्योंकि आगे पुश करेगा and the iris को पुश करेगा तो pupil block हो जाएगी and this in which the lens size rises respond to it. साल 2 साल बाद हाइपर मैच्योरिटी हुई और साथ ही फॉलोड वाज लेंस इंड्यूस्ड ग्लाकोमा फेकोमार्केट। दूसरी वैरायटी फेकोनिक्टिक की है in which the proteins inside the capsule get degenerated and dissolved, come out of the nucleus. Are these proteins will come into the interior chamber. पहले तो है ना फ्लूइड अंदर गया था, शेप बड़ी हो, साइज बड़ा हो गया। अब इसमें से प्रोटीन्स बाहर लीक कर रहे हैं and has come to the interior chamber. When these proteins come out of the lens into the interior aqueous of the interior chamber, these proteins are treated as foreign proteins and immediately inflammatory cells come and act. And these proteins are then engulfed by the